Assalamu alaikum guys, this is Tariq Sumro. I'm here with a new video for you. In earlier videos we studied what is adverb, we discussed its kinds, and also we studied one of its kinds, that is adverb of time. So in this video we are going to study adverb of place. I strongly recommend to look at the question carefully. Half of the answer is already available in question. The topic is adverb of place. So whatever we would be discussing in this video definitely would refer to some place or directions. Let's study its definition. Adverbs which describe the location or the place where an action is taking place. ऐसा कोई एडवर्ब जो ये बताए कि काम कहाँ पे हो रहा है, किस तरफ हो रहा है. Here the word action means verb. Another definition is it gives us the answer of where. अगर आप प्रीवियस वीडियो को याद करें तो उसमें था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ टाइम. It gave the answer of when or what time. This adverb gives you the answer of where, कहाँ, किस जगह. And the examples are somewhere, everywhere, here, there, nowhere, eastwards, southwards, northwards, towards, forwards, upstairs, सीढ़ियों के ऊपर, downstairs, सीढ़ियों के नीचे, abroad, बाहर, away, दूर, around, आसपास, backwards, पीछे, nearby, आसपास. I have written some sentences. I have used these adverbs, adverb of time in sentences. Let's discuss them one by one. It is raining. The question is, where is it raining? It's raining here. It's raining there. भाई बारिश हो रही है. कहाँ पे बारिश हो रही है? It's raining here. यहाँ पे बारिश हो रही है. ये यहाँ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि रेनिंग के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. रेनिंग की प्लेस या डायरेक्शन बता रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस इज, डू यू लिव नियर बाय? द क्वेश्चन इज, वेयर डू यू लिव? भाई कहाँ रहते हो? आई लिव नियर बाय. मैं यहाँ आसपास रहता हूँ. ये आसपास रहने में इजाफा कर रहा है, रहने की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. ऑलरेडी वी डिस्कस कि भाई जो एक्शन के मुतल्लिक डायरेक्शन या प्लेस की इंफॉर्मेशन दे, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई हैव नोवेयर टू गो. वेयर हैव यू टू गो या वेयर डू यू हैव टू गो? कहां जाना है भाई तुम्हें? आई हैव नोवेयर टू गो, मुझे कहीं नहीं जाना है. ये कहीं नहीं क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. द शिप सेल्ड वेस्टवर्ड्स. भाई समुद्री जहाज चला, तैरना शुरू किया या तैरता हुआ चला. कहां? वेस्टवर्ड्स, वेस्ट की तरफ. ये वेस्टवर्ड्स क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस. व्हाट आर यू डूइंग देयर? भाई तुम कर तो रहे हो, कुछ कर रहे हो. कहां कर रहे हो? भाई देयर. ये देयर क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. शी टुक द चाइल्ड. वो बच्चे को लेके गई. वेयर डिड शी टेक द चाइल्ड? कहां पे लेके गई? She took the child outside. ये outside क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. क्यों? क्योंकि किसी एक्शन के मुतल्लिक जगह का तायुन कर रहा है. कोई वर्ड जो एक्शन के मुतल्लिक यानी वर्ब के मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन दे, जगह के बारे में या किसी तरफ के बारे में, यानी प्लेस या फिर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. द लास्ट सेंटेंस इज, दे हैव डिसाइडेड टू मूव. भाई उन्होंने यहां से जाने का इरादा कर लिया है. उन्होंने यहां से जाने का माइंड बना लिया है. वेयर हैव दे डिसाइडेड टू मूव? कहां पे जाने का इरादा किया है? दे हैव डिसाइडेड टू मूव अब्रॉड, यानी इस मुल्क से बाहर मुल्क, किसी दूसरे मुल्क. ये अब्रॉड क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, व्हाट आई जस्ट डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू. The remaining examples which I have written
you should make the sentences yourself. If you write the sentences in comments, I must reply you, inshallah ta'ala. Thank you very much.